Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to continue 3D geometry. In 3D geometry, we have to do the lines in space. In 11th class, we have already done the equation of lines passing through the 2 points in slope intercept form. Different forms will be there. And now today we have to do the equation of lines in space. First of all, we have the equation of a line passing through a fixed point and parallel to a given vector. Second one, the equation of line passing through the two fixed points. In 12th class, we have the two main topics: equation of a line passing through a fixed point and parallel to the given vector, and equation through the 2 points, two fixed points. Collinearity of 3 points, angle between two lines, ठीक है, and intersection of two lines, perpendicular distance, image of a point we have to do in the next class. First of all, we have the equation of a line passing through a fixed point and parallel to a given vector. Here we have given a line AP. This line AP passing through a point A and parallel to this M vector. We have to consider the position vector of A because it is passing to a fixed point. That means fixed point is there. Its position vector is A vector. We have to consider P arbitrary point whose position vector is R. जैसे 11th क्लास में हम पी एक्स वाई कंसिडर करते थे एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, यहाँ पर हम पी पॉइंट कंसिडर करेंगे जिसकी पोजीशन वेक्टर आर है. ठीक है, और ये जो हमारे पास दिस लाइन ए पी है वो एम के पैरेलल है. ठीक है, जैसे आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल होता है. तो इट मीन्स दिस AP vector is equal to lambda times M vector, where lambda is any real number. And now we have to find this AP vector. AP vector means position vector of P minus position vector of A. That means we have R vector minus A vector is equal to lambda times N vector. That means we can write this as vector R is equal to vector A plus lambda times M vector. This is the vector form of the equation of a line. And what is A vector here? A vector is the fixed point, position vector of the fixed point. And M vector is the direction of a गिवन वेक्टर. ठीक है, उसकी डायरेक्शन जिसके लाइन हमारे पास पैरेलल है. इज इट क्लियर? एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म. Cartesian equation of a line, that means here we have to substitute vector r is equal to xi plus yj plus zk. And given fixed point, that is vector A is equal to x1i plus y1j plus z1k. And this M vector, direction of a vector, that is AI plus bj plus ck. And now after substituting the values and comparing, we get x minus x1 by A is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. This is the Cartesian form of the equation of line, where ABC are the direction ratios of the given vector. And now see the example. If the Cartesian equation of the line is x minus 5 by 3 is equal to y plus 4 by 7 is equal to z minus 6 by 2, then find its vector equation.
वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. So first of all, we have to consider this x minus 5 by 3 is equal to y plus 4 by 7 is equal to z minus 6 by 2 is equal to lambda. From this, first x minus 5 by 3 is equal to lambda. Find the value of x. X is equal to 3 lambda plus 5. And from this, y plus 4 by 7 is equal to lambda. Y is equal to 7 lambda minus 4, and similarly z is equal to 2 lambda plus 6. Okay, and now we have to consider this vector r. Vector r is equal to xi plus yj plus zk. That is the position vector of a point p x y z on the line. Then we can write this as वेक्टर r, यानी कि इसमें हम x y z की वैल्यूज जो हमने पहले फाइंड किए हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. x is 3 lambda plus 5, y is 7 lambda minus 4, and z is 2 lambda plus 6. Substituting this and now simplifying this, it becomes vector r is equal to 5y minus 4j plus 6k plus lambda times, from this term we have to consider lambda common. Lambda into 3i plus 7j plus 2k. This is the required equation of the vector, equation of line in the vector. Okay, what is the fixed point? The fixed point is, position vector of fixed point is 5i minus 4j plus 6k, and parallel to the vector, that is 3i plus 7j plus 2k. Is it clear? And now see the second example. Find the equation of a line in both vector and Cartesian form passes through the point 5 minus 2 4 and parallel to the vector 2i minus j plus k. First of all, we have to consider the point position vector of r, that is any point. And now here we have given a vector passing through a fixed point. This a vector becomes 5i minus 2j plus 4k, and parallel to the vector 2i minus j plus k, that is m vector. M vector is equal to 2i minus j plus k. And in vector form we have vector r is equal to vector a plus lambda times m vector. And now substitute the values of vector a and vector m. It becomes vector r is equal to 5i minus 2j plus 4k plus lambda times 2i minus j plus k. This is the vector form. And now we have to convert into Cartesian form. In Cartesian form, you have to consider p, x, y, z, that is any point which lies on the line, and vector r is the position vector of p. And now this xi plus yj plus zk is equal to 5 plus 2 lambda into I plus minus 2 minus lambda into j plus 4 plus lambda into k. And now we have to comparing both sides. X is equal to 5 plus 2 lambda, y is equal to minus 2 minus lambda, and z is equal to 4 plus lambda. And therefore we can write this as x minus 5 by 2. लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट, वी गेट y प्लस 2 बाई माइनस 1, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास होगा z minus 4. Is it clear? This is the Cartesian form. And now we have the line passing through the two fixed points. Here the two fixed point A and B, whose position vectors is vector A and vector B, and P, that is the position vector of any point on the line. And now as you see, the direction of line will be AB vector, and this line having the direction AB vector, because A, B and P lies on the same line. When it is lies on the same line, it means we have the direction of AP is equal to direction of AB. Okay,
And now we have AP is collinear to AB. It means AP vector is equal to lambda times AB vector, where lambda is any scalar. Like the same way, AP vector, that means position vector of P minus position vector of A. That means vector R minus vector A. And AB vector, that means the position vector of B minus position vector of A. Position vector of B is B minus vector B minus vector A. And therefore we can write this as vector R is equal to A vector plus lambda times B vector minus A vector, which is the required equation of a line passing through the two fixed points. हम इसको वेक्टर b प्लस लैम्डा टाइम्स a माइनस b वेक्टर भी राइट कर सकते हैं. अगर हम डायरेक्शन इसकी ba लेंगे तो पहले हम b वेक्टर की राइट करेंगे. दोनों से हमारे पास इक्वेशन सेम आएगी. एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म. Here we are to consider vector r is equal to xi plus yj plus zk and vector a is equal to x1i plus y1j plus z1k and vector b is equal to x2i plus y2j plus z2k. Then we can write this as, ये वैल्यूज हमें कार्टीज जो वेक्टर इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और कंपेयर करने हैं आई जे के कंपोनेंट्स. देन वी गेट x minus x1 by x2 minus x1 is equal to y minus y1 by y2 minus y1 and z minus z1 by z2 minus z1. अगर आप ये फर्स्ट टू कंसीडर करो और फर्स्ट टू कंसीडर करके ये जो y2 माइनस y1 है इसको इधर लेके जाओ तो आपकी किसकी इक्वेशन होगी? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री. ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हमने की हुई है, लास्ट ईयर हमने की थी. अब इसमें थर्ड पॉइंट हमने ऐड कर दिया z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. Is it clear? And now we have to see the example. Find the vector and Cartesian equation of a line passing through the point A 3 4 minus 7 and B 5 1 6. तो हम सपोज कर लेते हैं लेट वेक्टर A is equal to 4i 3i plus 4j minus 7k and vector B is equal to 5i plus j plus 6k. And b minus a vector 5i plus j plus 6k minus of 3i plus 4j minus 7k, that is equal to 2i minus 3j plus 13k. And now substitute the values in the equation. Here we have the vector r with the position vector of any point on the line. Then vector r is equal to vector a plus lambda times b minus a vector, that is the vector form. Substitute the values of vector a and b minus a, you will get the required equation. And now in Cartesian form we have x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1. या तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे x1 y1 z1 की, x2 y2 z2 की, या हम इस जो इक्वेशन है इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया है. ओके, एंड नाउ यू विल गेट द इक्वेशन x minus 3 by 2 is equal to y minus 4 by minus 3 is equal to z plus 7 by 13. और डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो ये पॉइंट्स x minus 3, y minus 4, z plus 7 और ये जो लैम्डा के मल्टीपल्स में है दैट इज द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन से हमारे को डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे 2 minus 3 13, वो हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे. Is it clear? And now next example. Find the coordinates of the point where the line through the points 5 1 6 and B 3 4 minus 1 crosses the YZ plane.
अब 2 पॉइंट से भी पास कर रही है और साथ में YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है, हमने वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, उससे हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर R इज इक्वल टू 5i प्लस j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स 3 माइनस 5i प्लस 4 माइनस 1 इंटू j प्लस 1 माइनस 6 इंटू k। डायरेक्ट इसमें हम जो इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन है उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट वेक्टर R इज इक्वल टू 5i प्लस j प्लस 6k plus lambda times minus 2i plus 3j minus 5k. Is it clear? And now the equation of a line passing through the YZ plane. ठीक है, अब हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं एनी पॉइंट ऑन द YZ प्लेन। YZ प्लेन पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, हम पॉइंट सपोज कर रहे हैं P is a point where the line AB crosses YZ plane. It means the position vector of P is YJ plus ZK. क्योंकि YZ प्लेन पर x 0 होता है तो इसलिए हमने क्या लिखा है, YJ plus ZK। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, इस गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो AB के ऊपर भी लाई करता है। तो इट मीन्स जो वेक्टर R है, वेक्टर R के स्पेस पर हम YJ प्लस ZK राइट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन से पास करता है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इट मीन्स YJ प्लस ZK इज इक्वल टू 5i plus j plus 6k plus lambda times minus 2i plus 3j minus 5k. And now comparing both sides, the components of components of ijk, it means it becomes 0 is equal to 5 minus 2 lambda, y is equal to 1 plus 3 lambda and z is equal to 6 minus 5 lambda। ठीक है, इसको हमने आई जे के की फॉर्म में राइट किया था, फिर इसको कंपेयर किया। अब हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, फर्स्ट से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5/2 और y और z में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। दैट मींस सॉल्विंग 1 2 एंड 3 वी गेट y इज इक्वल टू 17/2 एंड z इज इक्वल टू -13/2। It means the required point is 0, 17/2 minus 13/2. Is it clear? And now collinearity of 3 points. 3 points collinear कब होती है? तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि ABC is the 3 point which position vectors ABC, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C are given. ये 3 points हमारे पास given होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी की इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी। ठीक है, अब ये जो थर्ड पॉइंट है, क्योंकि एक ही सेम ही लाइन के ऊपर लाई करना है, ये हमें चेक करना है। तो इट मीन्स जो सी वेक्टर है वो हम आर वेक्टर के स्पेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये बोथ साइड्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। ABC are collinear if C satisfy number 1. It means C vector is equal to A vector plus lambda times B vector minus A vector. ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं लाइंस के लिए। अदरवाइज जो है ना, हमने डायरेक्शन रेशियोज में भी किया था कि हम AB की डायरेक्शन रेशियोज, BC की डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड करते हैं। अगर AB की डायरेक्शन रेशियोज और BC की डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होती है तो हमारे पास लाइंस क्या होती हैं, AB इज पैरेलल टू BC, तो B पॉइंट कॉमन होता है तो ABC कोलिनियर होता है। ठीक है, वो डायरेक्शन रेशियोज का कंसेप्ट था, अब हमारे पास लाइन का कंसेप्ट है। ओके, एंड नाउ सी द एग्जांपल, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर I minus 2j plus 3k, 2i minus j plus k and 3i minus k are collinear.
we have to consider ABC, vector A, vector B, and vector C. As you know, A, B, C are collinear. If vector C is equal to vector A plus lambda times B vector minus A vector. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या जैसे हमने बेसिक इसका कंसेप्ट किया, यानी कि पहले हम ए बी की इक्वेशन फाइंड कर लें और उसके बाद सी उसमें पुट करके चेक कर लें, या हम ये कर सकते हैं ए बी सी की वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. 3i माइनस के is equal to I minus 2j plus 3k plus lambda times 2i minus j plus k minus of I plus 2j plus 3k. This is the position vector of A. Okay, and now we have to simplify this. ये जो term है I minus 2j plus 3k take on this side. 2i plus 2j minus 2k minus 4k, and that is equal to lambda times I plus j minus 2k. I plus j minus 2k इसको सिंप्लीफाई करके आया हमारे पास. अब यहाँ से हमारे पास जब इसमें से अगर हम 2 कॉमा लेते हैं तो इट बिकम्स 2 into I plus j minus 2k. तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2. ठीक है, इट मीन्स ये दोनों हमारे पास क्या है सेम है, और लैम्डा हमारे पास क्या है 2. दैट मीन्स वेक्टर C इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A वेक्टर फॉर एनी रियल नंबर लैम्डा. ठीक है, इट मीन्स द 3 पॉइंट्स आर collinear. Is it clear? And now the angle between two lines. अब एंगल बिटवीन टू लाइंस अब अब की बार हमारे सिलेबस में डिलीट हो गया है, लेकिन इसको हम करेंगे क्योंकि कुछ काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसको. एंगल बिटवीन टू लाइंस वी हैव टू कंसीडर द वेक्टर r is equal to a1 वेक्टर प्लस lambda टाइम्स b1 वेक्टर एंड वेक्टर r is equal to a2 वेक्टर प्लस mu टाइम्स b2 वेक्टर b2 स्ट्रेट लाइंस. These straight lines are in the direction of B1 and B2. ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करना है तो इट मीन्स द वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस. वी हैव टू कंसीडर थीटा इज द एंगल बिटवीन these two lines and theta is the angle between B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर्स में किया था. एंगल बिटवीन टू लाइंस दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू B1 vector dot B2 vector upon magnitude of B1 into magnitude of B2. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का हमने यूज करके cos थीटा फाइंड करेंगे. ओके, अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करने से पहले इसके कंसेप्ट देखिए कि जब हमारे पास टू लाइंस परपेंडिकुलर होती है, टू लाइंस परपेंडिकुलर है, इट मीन्स B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0 और टू लाइंस आर पैरेलल, देन वी हैव B1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर. ठीक है, ये जो कंसेप्ट है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर पैरेलल, ये बहुत बार यूज होगा इसके अंदर. ओके, एंड नाउ वी हैव टू सी इन द कार्टेशियन फॉर्म. Let the equation of two lines be x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. And second line x minus x2 by a dash is equal to y minus y2 by b dash is equal to z minus z2 by c dash. What is the direction ratios of first line, that is ABC, and direction ratios of second line is A dash, B dash, C dash. It means B1 vector is ABC and B2 vector is A dash I plus B dash J plus C dash K. ठीक है, ये वैल्यूज हमने लास्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट की है. वी गेट that is the B vector dot B2 vector divided by magnitude of B1 into magnitude of B2. And now here we get cos theta is equal to A into A dash plus B dash plus C dash divided by root of A square plus B square plus C square into root of A dash square plus B dash square plus C dash square. ठीक है, this is the angle between two lines.
एंड नाउ इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, वो हमने वेक्टर फॉर्म में किया था कि जो b1 डॉट b2 वेक्टर है वो 0 के इक्वल है। जब हम b1 डॉट b2 वेक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। ओके, this is the condition for perpendicular lines. And if the lines are parallel, then we have a upon a dash is equal to b upon b dash is equal to c upon c dash। ठीक है, जब कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो हम ये यूज करेंगे, और जब हमारे पास वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो हम डायरेक्ट वो वाली यूज करेंगे। और अगर हम उस कंसेप्ट को यूज करना चाहे, वेक्टर फॉर्म को कंसेप्ट को यूज करना चाहे, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को हम वेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके जो हमने लास्ट फॉर्मूला की है वेक्टर फॉर्म वाला, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड नाउ सी द एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। हियर a1 vector is 3i plus 2j minus 4k and b1 vector is i plus 2j plus 2k। यानी कि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर एंड वेक्टर r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। इट मीन्स b1 वेक्टर आर i plus 2j plus 2k and b2 vector is 3i plus 2j plus 6k। And now angle between two lines, theta is the angle between two directions b1 vector and b2 vector। It means we have cos theta is equal to b1 dot b2 upon magnitude of b1 into magnitude of b2, and substituting the values here b1 vector and b2 vector and simplification we get cos theta is equal to cos inverse 19 by 21। Is it clear? And now we have the next one, find the angle between pair of lines। अगर हम चाहें तो इसको लास्ट वाली फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी। अब इसको हम डायरेक्ट यहीं से करें। इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि जब यहाँ पर z इज इक्वल टू 5 गिवन है तो z इज इक्वल टू 5 को हम कैसे राइट करेंगे, इस 5 को इधर ले जाइए, z माइनस 5 बाई 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास पॉइंट बनेगा ए बी सी यानी कि डायरेक्शन रेशियोज का, वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में एक चीज ये देखिए, जब ये हमारे पास ये है ना x प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाई 2। अब ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या थी, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। अब यहाँ पे जो टर्म गिवन है वो 2y माइनस 3 बाई 3 है, तो इसको हम y माइनस y1 में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 कॉमन लेंगे, उस 2 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। वी गेट दिस y माइनस 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2। ठीक है, and therefore b1 vector and b2 vector are parallel to one and two lines। It means b1 vector now becomes 3i minus 2j plus 0k and b2 vector is I plus 3 by 2j plus 2k, and therefore the angle between two lines, we can write this cos theta is equal to b1 dot b2 upon magnitude of b1 and magnitude of b2। Here you will get cos theta is equal to 0। Cos theta is equal to 0, that means two lines are perpendicular, it means angle is equal to pi by 2। Is it clear? Any doubt? Then you can ask to me। Thanks and have a nice day।